Hello everyone, my name is Navnee. I am an intern with LEXIS and Company. Today I have got an opportunity to talk with you all about a very important topic, and a topic which I guess needs more information and insight. A lot of us needs to know more about this. A lot of budding lawyers, a lot of advocates, a lot of practicing advocates require more information, and most importantly, as a general citizen of India, we all must know about our rights. If we are going to advocate, we must know for what we are contesting and what is our stage. Everybody has a right to information, and everybody has right to know what is happening with his or her life. So the topic which today I am going to discuss is bail. Yes, a lot of us hear that इसने ये ऑफेंस कर दिया, इसने वो ऑफेंस कर दिया, अब इसकी बेल लगवानी पड़ेगी. So what is bail and how is bail given? What is the procedure of bail? Everything is very simple. We just need to know about it step by step. So starting with the topic, the very important thing which everybody must know is what is bail? Bail है क्या? Bail is a release of an accused person from the custody by furnishing a bond, by executing some bond or furnishing some security. So very first question comes कि custody क्या है? What is custody? Custody is of two types. One is judicial custody and another is police custody. जब आप कोई offense commit करते हो, अगर तो आप पुलिस कस्टडी में हैं, तो पुलिस हैज़ द राइट टू ग्रांट यू बेल. यू कैन गो टू पुलिस ऑफिसर एंड यू कैन से दैट मेरा बंदा है वो आपकी कस्टडी में है, तो आप मुझे बेल ग्रांट कर सकते हो. यू आर स्टिल इन पीसी for whom you are contesting, or if you are contesting it for yourself, you are still in police custody and police has a right to grant you bail. But when you are in a judicial custody, then comes the role of magistrate. Then police has no role in granting the bail. Only magistrate can grant you the bail if you are in JC, which means judicial custody. So yes, जब भी कोई बंदा किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी ऑफेंस के लिए, नॉट अ क्राइम, किसी भी ऑफेंस के लिए अक्यूज होता है और कस्टडी में रख दिया जाता है, तो ही कैन कंटेस्ट फॉर हिज बेल बाय एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड. बॉन्ड मीन्स दैट ही विल फुलफिल द कंडीशंस ऑफ द बेल. क्या होती हैं बेल की कंडीशंस? कि वी विल अटेंड द कोर्ट बाय दिस टाइम, वी विल नॉट फ्ली टू एनी अदर कंट्री, एंड देयर आर सेवरल कंडीशंस. वी विल नॉट टैम्पर द एविडेंस, and so. And what are furnishing securities? By giving some securities for executing the bond, so that person can be released. And talking on further, just because you are an accused or you are charged with an offense, it does not mean you are to be put in the custody for endless period. आप कस्टडी में नहीं रखे जा सकते हो एंडलेस पीरियड के लिए. ये आपका मैटर ऑफ राइट है to fight for your bail. आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट मिला है. तो दैट मीन्स वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू बी इन द कस्टडी फॉर एंडलेस पीरियड. इट इज़ आवर राइट टू गेट बेल. Here I will talk about a very important judgment by Supreme Court. It is very important to contest your bail. Every citizen must know that in the case of State of Rajasthan versus Balchand alias, the Supreme Court stated that bail is a rule and jail is exception. Bail is a matter of right. Bail is a matter of right and jail is exception. तो हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है. अगर हम किसी एडवोकेट के पास जाते हैं या हमारा कोई केस फाइल होता है या हमें पुलिस ऑफिसर कहता है कि आपको बेल नहीं मिलेगी, तो आपको बोलना है बेल हमारा राइट है. वी आर हेयर टू कंटेस्ट आवर बेल. तो ऑफेंस, आप किसी भी ऑफेंस से चार्ज होते हो तब आपको बेल
के लिए जाना पड़ता है। तो ऑफेंसेस भी दो टाइप के होते हैं। अ लॉट ऑफ अस आर नॉट अवेयर दैट ऑफेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले टाइप का ऑफेंस होता है बेलेबल ऑफेंस और दूसरे टाइप का ऑफेंस होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंसेस थोड़े नॉन ग्रीवियस इन नेचर होते हैं, टू टॉक इन लेमैन्स लैंग्वेज, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर अ लिटिल मोर ग्रीवियस इन नेचर। तो बेलेबल ऑफेंसेस में तो बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट, पुलिस भी हमें बेल दे सकती है बेलेबल ऑफेंसेस में। बट जब बात आती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की, देन यू हैव टू कंटेस्ट योर बेल। येस, इट इज़ योर राइट, बट यू हैव टू कंटेस्ट योर राइट, कंटेस्ट फॉर योर राइट। इट इज़ नॉट योर मैंडेटरी राइट। ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले बेल क्योंकि आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस विच इज़ वेरी ग्रीवियस। इन ऑर्डर टू मेंटेन द रूल ऑफ लॉ इन सोसाइटी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको बेल मिले। तो ओनली कोर्ट ऑफ लॉ मजिस्ट्रेट कैन ग्रांट यू बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। पुलिस आपको बेल ग्रांट नहीं करती। तो अब पता कैसे लगाएं? आपके पास समन्स आए हैं, वारंट आया है, नोटिस आया है कि हमें कौन से सेक्शंस में चार्ज किया है, कौन से ऑफेंस के साथ चार्ज किया है, क्या ये बेलेबल है या क्या ये नॉन बेलेबल है। A lot of us are not aware. We are aware about the offenses, but we are not aware about the nature of our offense. तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का शेड्यूल 1 हमारे ऑफेंसेस के बारे में और उनके नेचर के बारे में बात करता है। शेड्यूल 1 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड talks about all the offenses and states whether they are bailable offenses, non-bailable offenses, cognizable offenses, non-cognizable offenses, or by which code the offenses will be tried. All of the information is given there. So if we are charged with certain section, we shall directly move to the schedule 1 of the criminal procedure code and check the information about the offense we are charged with. Moving on forward, I will like to talk about bail. हमने bailable offense की बात करी, non bailable offense की बात करी. Now I will talk about what and how it goes. तो bail in non bailable offenses की बात करी जाती है सेक्शन 436 में। अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से बात करें तो चैप्टर 33 ऑफ आवर कोड टॉक्स अबाउट बेल एंड द बॉन्ड्स ऑफ बेल। चैप्टर 33 का सेक्शन 436 बात करता है इन व्हाट केसेस बेल कैन बी टेकन। बेल किस केस में मिल सकती है, मतलब कि बेलेबल ऑफेंसेस में आपको बेल कैसे मिलेगी। Where a person is accused with any offense other than non-bailable offense, then here the bail is matter of right. I am focusing it again and again. अगर आपका bailable offense नहीं, अगर आपका bailable offense है, non-bailable offense नहीं है, then bail is your matter of right. So section 436 क्या कहता है that अगर आपने कोई भी आप accused हो और you are suspected with commission of an offense which is non-bailable, then you can contest for your bail. And bail आपका right है और आपको अगर if you are the section it is very important to know another thing about section 436 is that the proviso of section 436. So some people are there who says that we are not able to furnish security for our bail. हम security furnish नहीं कर सकते. We don't have the money or we don't have the resources to furnish any security. तो भी हमारे पास एक right है which we should be aware of. I am going to read it. Section 436 का proviso कहता है provided that such officer or court if he or it thinks fit may and shall, if such person is indigent and is unable to furnish surety, instead of taking bail from such person, discharge him on his executing a bond without sureties for his appearance, as herein provided. तो ये सेक्शन ये कहता है if you are not able to furnish your securities, then you should be discharged
विदाउट एग्जीक्यूटिंग बाय एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड. आप एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दो और श्योरिटीज मत दो and you will be discharged. But it also says that if the police officer or court may and shall, both the words here are used, may and shall, if the person is indigent and unable to furnish surety. I said that. So it's a power given to you as well as their discretion, but you have the right and you can state that if you are unable to furnish a surety. But again here comes a condition. आपने श्योरिटी तो फर्निश नहीं करी है, बट यू हैव एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड, एंड इफ यू फेल टू कंप्लाई विद द एग्जीक्यूशन ऑफ योर बॉन्ड, मतलब कि आपने बॉन्ड तो साइन कर दिया बट यू फेल टू कंप्लाई विद इट्स एग्जीक्यूशन, देन your bail may be refused and you may be charged with a penalty. You must be given a right to speak for yourself, but your bail can be refused and you will be punishable with the liability. Here I will talk about a very important judgment by Supreme Court. It is a landmark case which is Rasik Lal versus Kishore. ये 2009 का केस है. Accused was charged with section 499 and 500 for the offence of defamation. बेल ग्रांट हो गई थी श्योरिटी देने पर 5,000 की, तो अक्यूज ने सब्सिक्वेंटली कुछ कंडीशंस वायलेट करनी स्टार्ट कर दी बेल की. देन द हाई कोर्ट कैंसल्ड द बेल. हाई कोर्ट ने बेल कैंसिल कर दी. अक्यूज्ड को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपना रीजन स्टेट करने की, टू स्टेट एनीथिंग. Then Supreme Court, then he went for an appeal to the Supreme Court and Supreme Court cancelled the order of High Court stating that it is not the question of discretion. Then the Supreme Court again mentioned that bail is an indispensable right. अगर आपका offense non-bailable है तो bail is your indispensable right. Moving on further, there were various conditions which were laid down by the Honorable Court for cancellation of bail. Cancellation of bail तब होती है when you misuse your liberty. The liberty which you have been given, आप उसको misuse कर रहे हो. You are interfering with the investigation. आप कैसे interfere करते हो? You are tampering a evidence. You are tampering some witness. Then your bail will surely be cancelled. You are threatening some witness. You are fleeing to some other country altogether, and if the court comes to know about it, then there will be no chances given for it and your bail would be cancelled. आप अपने आप को अनअवेलेबल करते हो कोर्ट के आगे. आपने जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया उसके कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करते हो, then the court can cancel your bail. Now moving on further, I want to talk about bail in non-bailable offences.